टेक्नोलॉजी मस्त देखते मला भी टेक्नोलॉजी चालू किसने किया? नहीं किया भैया नहीं किया चलो शुरू किया क्या या फिर चलो वॉशरूम में चल मैं ऑफिस के अंदर से हो गया चिप्ची काटू दे पेड़ पे स्कूल मैं फोटो लूंगी ए हट इधर आ जल्दी जल्दी hell no you're not applying to what is that by the way where are you from I am from my house okay. You look like a mad man dude I am a mad woman too snap number को भेज भी नहीं थी मेरे सामने को ऐड कर दिया I mean that's right I'm not on snap right snap is it is fun but I did some kind with that और इस सब मेरे साथ आपस में हो नहीं रहा है unfortunately क्या किया तुमने हाइड ऐप किया उसने हाँ पासवर्ड ही नहीं right you can fix it I don't want to reset every single fucking thing, you know. yeah बंद कर दे हाँ फेवरेट वाज कौन ये क्यों यार ये वो लेक्चर में म्यूट हुआ था वो मैंने किया था तूने किया था वो स्टार्ट में लाइक अपन ही थे मैंने म्यूट किया फिर मैं अनम्यूट करना भूल गई थी पूरा लेक्चर ही बंद हो गया ICSE इतना कुछ हो गया अबे मुकेश कैसे नहीं लगा I don't know मैं वैसे नहीं करती ब्रेकफास्ट में ये कॉल इज नॉट द फर्स्ट नहीं मेरे को भूख नहीं लगती है लगती है तो आई मान लो किधर है क्लास 10 का ये थाईलैंड का हिस्ट्री देख थाईलैंड में हिस्ट्री क्या उधर देख क्यों देखना देखो थाईलैंड का Why not? Candidates offering history, civics, and geography in Thailand are not eligible to offer history. ICSE थाईलैंड Class 9 का है ये. Alicia would know she went to Dubai. ये रहा class 9. उधर लाए में No. ये रहा. Alicia came out at Distribution of temperature in you know what? TEDx talks. You know it's very
It's like वहाँ पे young teenager या फिर जो भी हो सकता है, they will speech and show. So Alicia is. अबे कैमरा में बंद है. हाँ but we can just नहीं यहाँ पे कैमरा ऑफ का नहीं है. अरे गूगल मीट में सामने. End stream कर रहे हैं. क्यों करना है ये? भाई आदि का चाय दूर गया बीच में वो खड़ा है उधर चाय बिस्किट खा रहे हैं सर यूट्यूब के सामने इनकी मैच तो पता तो रिकॉर्ड इधर के रुक मैं कैमरा को कवर करता हूँ अरे मैं जीत गई. मैं तो बोलना आ रहा था कि इसमें दिमाग नहीं है तू कुछ वो जीती. वही तो बोलना आ रहा था कि तू जीत जाएगा लेकिन तू नहीं जीता क्या कर सकते हैं ना. बाकी आया अरे नहीं मैं पहुंच ही गया था. तुम लोग खा रहे थे. हाँ मेरे को लगा तो ऊपर लेकर आ रहा था. मैं वही बोला था को ले आते तो हम लोग खाते हैं उधर अबे भाई मैं भाई अंकल लोग को फ्री जल्दी जल्दी Oh God, मैं पक्का नहीं खा पाता रात में. क्या चल के गया मैं. साइकिल नहीं लेकर अरे आया. कभी चेन निकल गई. अभी वाओ. अभी देख तेरे को सर्विसिंग के लिए डालना पड़ेगा और पैसे लेके तेरे को. मैं घर पे जाऊंगा इसको तो लॉक करके जाना पड़ेगा. इधर तू मत चला जाओ के सीधा. लेगा। तू इससे अच्छा अर्षित इससे कम जाए. अबे उस दिन ही चला के जाना साइकिल वो तेरे घर उस दिन ही लगाई थी तेरे वो तो गियर लगाया था. गियर सही करा था. अभी क्या किया फिर अभी चेन निकल रही है साइकिल की. साइकिल लेके क्या है ऐसे क्या कर रहा है. मैं इधर से मैं सर के बुला के नाम किया नहीं. तो अभी सुन मेरी यू आर 2 सेकंड डम में जीत गई. डम. अरे आधा मत कर. क्यों? मेरा बाप इधर है तो फिर बता स्टॉप. सोचेगी मेरा बाप क्या जीत गई तो कितना अरे बड़ा यार. डम है. और एक बेस्ट ऑफ थिंग अभी मैं अरे मैं बोल रहा हूँ ये और युवराज क्या कर रहा है? हक दिया तूने. ऑफिशियली हक दिया तूने. कितना डम हो सकता है. और मैच को मैच बोलते हैं ए मेरे हाथ से. और मैम को मैम बोलते हैं सर आ तू ही गए. करा ना. मैं तीनों बार मैं जीत गई. Why all students are outside? You are not allowed to touch the board. सर इट Sit down. Sit down. सर वो एसी वाली Hey, sit down. No hand wash. Sit down. me and Then what were you doing on the board? I just came All going to your benches. sir I just came Take a minute. Will you settle down now? Well, sit down. Sit down for a while. You sit on the hand, is it? Sit. सर एसी बंद करना है Hey, listen. 1 15-minute break is done. Whoever wants to go out, I will not allow them in. Go. I will not allow them. I'm very thirsty So that's not my problem. Sir, fan चालू करो. सर एसी बंद कर दो सर प्लीज Teacher is given the work not by the students. Sit down. Sir, Can you please turn on? No, you please sit down. sir can you on the light for studying purposes On the light, there is no word called on the light. can you switch on the light so that we can get enhancement सर एसी बंद कर दो You're not very fast. Hey, sit down. Let's proceed with our lectures. Did I give that summer season? Yeah. Southwest monsoon. सर स्विच ऑफ Southwest monsoon. Yes. Handful of people having trouble
to do this, do that. Even during the lectures also there is no big performance. Some unwanted players are doing sabotage of my lecture, which I am allowing you. Just because I am allowing you, you are doing all this. I have come from that side to this side. Now one is hand wash, other is, I don't know, filling up the water. All this within that 15 minutes, not outside the 15 minutes. Server 61. हाँ, अरे भाई घर में ऑलरेडी डिजाइनर पूरा मेरे एक उधर लास्ट में जब आई रुको। इतना नहीं कुछ छोड़ वो मैच करना नहीं वो बड़ा हाइट तेरा बॉडी देख Hey, write down the next heading. What was it then? Summer season, is it? Southwest monsoon we did. खत्म किया. Then northeast. Wait, where is the word? All hooligans are put together. I have a pity of your school teachers. What you guys might have done to them. And I'm not your school teacher to do all that activity. Wo, just read my last point, my dear. You only. Northeast. Your last point is southwest. Less than 30 centimeters of Very good. Very good. चलो retreating monsoon लिखा. लिखो. Bracket में लिखो winter monsoon. Northeast. Yeah, northeast winter monsoon. ले रखना उधर नहीं आगे रख लो भाई. आगे रख ले Observe in between October to November. Observe in between October to November. Observe in between October to November as the winds starts retreating. Observe between October to November as the wind starts retreating from the north towards the east. Yeah, who came and cleared the board? You guys only did it. No, you don't do. That is the work of the office person. He will do. Okay. And because your cleaning, I could identify. It is not done by professionals. Chalo, next point. Winds blow from land to sea. Winds blow from land to sea. Hence, winds blow from land to sea. Hence, dry. Well, he has kept in 19. That is the reason you are feeling that freezing time. Correct. Let's speak about that. You know, as per official announcement, 24 से नीचे नहीं जाना चाहिए. 24 कर दो. हाँ तो उसी में तो रखा है. सर आपको 40. उधर बैठ जाओगे डायरेक्ट विंटर पूरा कितना विंटर मिला सर 20 कर दो. मैं उस तरह पेपर देता हूँ. वो क्या तो बीच में आ रहा था ना. Next one. What did I say? Dry. इधर भी कर दो. Winds are dry and responsible for. Winds are dry and responsible for. Right? Dry winds are responsible. You cannot- Dry and winds are. अरे सर मैं करता हूँ. You only You confuse said me. dry winds. अच्छा ठीक है. Responsible for. I pity myself. Why do I come here? Dry winds are Winds are dry. Low rainfall, mainly in the coastal parts of Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Mainly in the coastal regions of Andhra Pradesh and Tamil Nadu. You write AP and TN. Coastal regions of AP and TN. Next point. आंध्र प्रदेश and Tamil Nadu. During this time, high pressures are created over
the northern and central. Do you want this disco lights to be done? Yes, sir. No. No. एक मिनट, लाइफ में जो भी डिस्टर्बिंग है ना वो तुझे सब पसंद है। कुत्ता अपना वो धूम रख रहेगा ना उसके भी जाके बाद में मिल जाएगा। How interesting it is. I mean, don't you think every 2 minutes it's switching off, switching on? You like that, is it? No, you like it. You only said don't switch it off. तो मतलब तू जब बोलेगा मैं स्विच ऑन करेगा, तू जब बोलेगा मैं स्विच ऑफ करेगा। हाँ, you come and switch it off. Come, I'll give you something. Come, that is what I'm calling you. एक और सवाल कर सकते So northern and central. Central parts of India are responsible for such movement. Responsible for हैं। एक साथ वो बंद नहीं हुआ। हो गया। Sir, I cannot write because this is either light नहीं है, इधर light नहीं है, वो ठीक है। I feel that hand is a problem. When I break that, na, you will never write. And I know where and which are the joints to be easily tackled. मैं बोला था आपने समझे ही नहीं। ये दोनों है ना हमारे यहाँ के सफाई कर्मचारी है। इधर कौन सा स्विच पे है सब जानते हैं। और ये सब जाकर कौन सा बता फ्लैश का मान्य मेरे को सब तकलीफ जब आते हैं वो बंद कर तब वो नहीं हो बोलते बात लॉजिक बहुत अच्छा। तो मैं फ्लश और वो भी तुम दोनों को अरे सर देखो आपने सब बंद करा तो बोले कुछ तो समझ नहीं हुआ आगे बढ़। इस बात के बाद You are not listening. Responsible for Such, what did I say? Such movements. Next. Now full stop. Okay. Next point. Let's ask you, sir. My smile should say. So next. हो गया ये खत्म। इसके आगे नहीं लिखूंगा फिर न्यूमेरिकल्स है हम सम सॉल्व करेंगे। Are responsible for Sir, either if you ask such. हाँ उनका बहुत ज्यादा है। हाँ ओके मूवमेंट्स ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट next point मतलब high temperature during daytime. Okay. High temperature during daytime with high humidity. High temperature during daytime with high humidity but during night low temperature but during the low temperature makes the climate ये लिखो highly oppressive makes the climate or season whichever you like highly oppressive. You know what is oppressive? Something like what is happening here with 2-3 people frustrating. yes sir, I read it actually oppression of poor. No, that is wrong. You keep your mouth shut. Oppressive. Put it into single letter account. Highly oppressive, which is generally known as October heat. Put it into single letter, which is generally known as October heat. Underline this word October heat. Now read this. Who can explain to me what does October heat mean? There is a question. What is October heat? 1 month का पूछता है. October में heat होता है। देखो normally when you are seeing daytime, हाँ the temperature is high. It's okay, sun है, but this is October month, है ना? And when you are moving away from this, अभी July, August, September के बाद suddenly winter नहीं आता है. एक मंथ का एक पैच है जहाँ आपको लगता है कि रेनफॉल से भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है. So what is the trouble now? Days are super hot and nights are exact opposite. Super cold तो नहीं बोलो, cool बोल सकता. So your body doesn't get accustomed to it. 12 घंटे में heat है और 12 घंटे का वो क्या cold है. So you feel like suffocation. So some oppressive. You know what is oppressive? The human body doesn't accept such sudden change. That is called as which heat? October heat.
तो जब नवंबर जाएगा फिर स्लोली हमारा दिसंबर से हमारा स्टार्ट क्या हो जाता है, विंटर। और विंटर में कौन सा रेज आता है इंडिया में, स्लैंटिंग और डायरेक्ट रेज? Slanting rays. How the temperature will fall gradually from south to north, है ना? नॉर्थ जाते जाते टेम्परेचर 10 डिग्री 2 डिग्री -40 तक जाता है, but not exactly in Kargil, but not exactly in Kashmir, in Kargil area, correct? So let us write the cold dry winter, that is last season. Cold, Sir, it's northeast. cold dry winter. Sir, it's northeast monsoon. So मैंने क्या किया? Cold north. अभी मैं दे रहा हूँ, तो बीच बीच में अपना फूलिशनेस का खुद ही एग्जांपल देते रहते हैं। कोल्ड ड्राई विंटर, observed between December to Feb, wherein India receives slanting rays from the sun. India receives slanting rays from, नहीं लिखना तो of the sun, whichever you can write, from the sun. Next. There is a gradual decline in temperature. Gradual decline in temperature from south to north. And marks the beginning of winters in India. South to north, and marks the beginning of winters in India. Underline that word, winter. One more sentence, that is neat meat. It is a season of low temperature. It is a season of low temperature and high pressure. Over big landmass stretching from Central Asia, up to the northwest Indian plains. Asia up to the northwest plains, Indian plains, northwest Indian plains. So, Up to the northwest Indian plains. Next one. So, Stretching from low pressure zone develops in the Indian Ocean. Underline the word low pressure and Indian Ocean. Tell me, is it correct or some mistakes you are observing? sir, stretching from low pressure zone. Very certain from Central Asia to North. वो बीच में कुछ छोड़ दिया। देखो इंडिया के अंदर the temperature is low. What will be the pressure? High. Then what will be on Indian Ocean? Temperature will be high and pressure will be low. Correct है ना? So that is what this line is. Don't get confused. अभी भी एक बार रीड करके देखो, you'll understand. अभी इंडियन ओशन के ऊपर हाई टेम्परेचर है तो उधर प्रेशर लो है। नेक्स्ट पॉइंट, So, the low pressure zone develops.
in Indian Ocean, resulting in the differences in the pressure. Next point. Difference in Pressure. It set or sets the beginning of, हम लोग ने एक मानसून किया ना अभी जो ऊपर लिखा था हम लोग ने, वो क्या था? नॉर्थ ईस्ट मानसून over. Now be very careful, don't get confused. Eastern coast of India. Okay. So is this the eastern coast? So we have this eastern Ghats which is broken, है ना? And this is continuously which Ghat? Western Ghats. So here we have EG, here we have WG. Now what is the difference here? Now these winds are moving from here to here, so it is, this is the path. And it is crossing over which coast also? ये है eastern coast और उसके अंदर है eastern Ghats. Is it broken? Everybody knows that. Why it is broken eastern Ghats? और dissected पूछता है, it is not broken, dissected. ये किसी को मालूम ही नहीं है. Very good. पता सर. मैं तो बोल ना. Dissect मतलब. अरे dissect Reason I am asking. इसका common sense उतना ही करता है. Next point, and that is the end of this answer. So why is it divided? Not divided, as later. Yeah. It is dissected. Dissected. I'll let you. Right up. The percentage of moisture and rainfall. The percentage of moisture and the rainfall is comparatively less. Comparatively less than the SW. What is SW? Yes. Change the pattern. So winds blow over the seas and the winds blow over the seas and the adjoining regions of Coromandel coast, southern Coromandel. Coromandel मतलब तमिलनाडु, हाँ? winds Coromandel. blow over the sea. हाँ, the southern Coromandel coast. Spelling also I write. Coromandel coast, ये है. Bracket you can write Tamil Nadu. Coromandel coast, Tamil Nadu, and the tip of AP, southern tip of AP. Title, popularly known as any monsoon. Popularly known as northeast monsoon. Now look here. These volumes that you guys are studying and you are getting now, that is one thing that you can get your answers quickly and easily. But now the numerical that you are going to see, page number 136 and page number 137. Perfectly board exam pattern hai, and perfectly you will get more than 2 questions in this volume if you get it. So I'll just list out certain formulas that you can copy down, but just wait for the time. The first thing the student gets confused is this. Okay. So if you haven't heard this word range, you have to blindly accept the highest minus the lowest for the temperature. So how do I derive the formula? अगर आपको questions देखिएगा तो the questions are generally in this format, correct? And there are 2 things given. What is the 2 things generally starting from the month of Jan going up to the month of December?
So first it might be temperature, which is generally in degree Celsius, correct? Second is rainfall, which is in centimeters. Question कैसे भी रहने दो, but then we have to arrange certain formulas accordingly. उसमें ही समझ जाता है. तो range मतलब I'll try to find out which month is having the highest. Similarly, I found out which month is having the lowest. So what is the formula? You have to write not the formula, but that month is it highest minus the lowest. And if it is temperature, the answer, for example, अभी आपको ऐसा मिला है. तो ये अगर नहीं लिखा, तो they will cut your marks. Degree Celsius. Here, second formula which is generally understandable and expected. ये बहुत simple है, but here only students get confused. And third also I'll write and try to see is a confusion clear. Annual downpour. Now the word is annual rainfall. So I will start from the month of Jan, Feb, then what we can say March goes up till the month of December. Sum of rainfall of all the months. Huh. But since the word is missing, average and a mean, you are not expected to divide it by 12. If you do it, then lose your 2 marks. Why? Purposely they will ask you this questions in between this. Now here it is there. One is average, other is mean. मतलब क्या है? The same formula will come down. And ये rainfall का नहीं आता. Generally temperature का ही आएगा. Then divided by 12. So you have to give us a sum. Sum तो है बहुत सारा. We are going to solve one by one. All the sums I will solve personally with you. So why is that 12 is coming? Sir आपने बोला ना sir, average निकाल. या तो mean निकाल. अभी और भी कुछ क्वेश्चन है जो जनरली आपको आंसर नहीं मिलता है. Look at it. They'll ask you identify the station, or they'll ask you identify the monsoon wind. First is monsoon wind. Let me tell you very clearly. Just understand this. फिर बाद में लिखना है. I'll give you the time. For this, I made it very clear. I'll ask my students to see is this October and November month. If it is rainfall is like 39, 45 cm, है ना? And बाकी जगह पर है 11 centimeters, 9 centimeters. Then no doubt we are experiencing which monsoon? Northeast monsoon. Because वो normally start कब होता है? October, November. Sometimes it goes up till December also. No sir, ये phenomena नहीं है. Phenomena different है. Sir, June में है ना temperature rainfall suddenly pick हो रहा है ना, and it goes up till September. So up till here it was 10 centimeters, 12 centimeters. Now June has shown 45 centimeters. July has shown 60 centimeters. And October में बोलता कुछ 90 centimeters. So it is giving me the answer for the station is experiencing which rainfall? Southwest. और एक क्वेश्चन आता है इसी में. Identify the station on which coast? तो simply which coast बोल के छोड़ देता है. As far as India is concerned, we have west coast here, है ना, and east coast here. अब इधर सर मैं कैसे डिसाइड करेगा कि ये ईस्ट कोस्ट में और वेस्ट कोस्ट में? West coast will generally experience which rainfall? है ना? And east coast. तो अगर मुझे इधर है ना तमिलनाडु और आंध्रा, I will see the northeast rainfall hitting. तो northeast rainfall hitting तो कौन सा मंथ का rainfall ज्यादा दिखेगा? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर. एक और एक फालतू क्वेश्चन भी देखा है मैंने. फालतू इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स आर नीचिंग देयर हेयर अपार्ट. Is the above station in India? है ना? If so, give reasons. बाहर का स्टेशन का तो हमको नहीं देने वाला, तो डायरेक्टली बोल दिया इंडियन स्टेशन ही है. Give reason for it. What all the reason will you give?
सर ये है ना सर ईस्ट कोस्ट में उछले ये रेनफॉल मिलता है, वेस्ट कोस्ट में वो रेनफॉल मिलता है. ये क्वेश्चन है अभी बोर्ड टेक्स्ट बुक में आएगा. अंडरस्टैंडिंग. सो कॉपी डाउन दीज 4 फॉर्मूला फर्स्ट and then we will literally jump into one after the other. नहीं numericals डालो. Silent numericals. I'll be checking your fair notebook, especially some by next lecture. A fair notebook and plus this volume का सारा worksheet का question चाहिए मुझे. Sir, this is my another notebook. हाँ no problem. भाई next Saturday अगर another notebook इधर नहीं आया फिर देखता हूँ कि क्या होता है. इसको ज़्यादा देखना पड़ेगा. मेरा तो यही मान. Show from the first page. बीच में गायब रहेगा कुछ. एक मिनट. अच्छा ये और आगे जा और आगे जा. हाईएस्ट में एक मिनट. ये क्या है? ये तो मैंने बोला था पहले. कौन सा मैंने बोला? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट मंथ्स टेम्परेचर. मुझे कोई इधर लिखा रहेगा एच एंड एल. हाईएस्ट माइनस द लोवेस्ट मंथ्स टेम्परेचर. इफ इट इज रेंज ऑफ टेम्परेचर एज मीन एनुअल रेंज पूछेंगे ना तभी भी वही जाएगा. मीन एनुअल के लिए डिवाइड बाय 2 करेंगे. Once copy say yes, we will jump into the sums. And this is where your intelligence and challenge comes. With the maths, you have not taken maths, my dear. Oh, you don't like it. Hey, you got the option of this. What is that? Eco and anybody has taken eco here in yours? You have taken. And the other subject, science is there. We have the choice between science and commerce. Ooh, then what did you pick up? There also Commerce. commerce. I was in science. Oh, very bad, yeah. And ठीक है. After 10th, if you are not intending to. No, I want to pursue a career which is in commerce. Ooh, what is it? See. तो इधर मालूम पड़ा इधर अभी कौन टाइप किया है यूपी के साथ. जेके शाह. JK is it, right? जेके शाह. क्या? तू साइंस करेगा मैं. तू टेंशन मत ले. लॉ पर इस JK commerce का. That is after something 12th. है ना? 11 12 कॉमर्स रहेगा which will lead to CA I have never ever ICSE. seen one child also in the law. No, once child is out. Twice I have seen once child. एक ही बच्चा ने देखा law पर. Oh, this is in Hindi, is it? I don't know. Sir, I didn't see even one. Who told you to see the law bacha? You come here to see the ICSE bacha. I am generally saying. Alright, moving on. I am seriously talking to my. What's your name? I didn't ask his name also. Hey, boy, what's your name? Boy. I'm Jerry. Ans is it? नाम में full stop रखा है और बाद में तो full stop ही नहीं. चलो. We are going to the sums. I will be taking the first sum very seriously and slowly so that there are some क्या बोलते हैं शक्ल में 12 बज के बैठेंगे sums क्या करेगा कुछ नहीं करेगा only add करना है. बट एडिशन में गड़बड़ क्यों होगा? 12 महीने का आपको डेसिमल पॉइंट में ऐड करना पड़ेगा. So. इसमें क्या है? Tenth grade में Addition में क्या है? किधर Identify 4 points. अभी ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं. आइडेंटिफाई द monsoon winds. उसके नीचे वो तो आंसर है ना. Everyone have copied? Yes. Shall we go ahead? Yes. Look at page number 136. Some people don't have module. No problem. They will be backing their face to the wall. So you directly take your notebook, write page number 136. And what is the question? 7 or 8? So system 60 होगा. 6 है ना? What question? Question number 4. देखो ऐसा लिखो and write 1, then 2 and 3. So what is the first question? Please read. So we have to write the 5th and 6th. No need. Go ahead. Calculate the annual range of temperature. देखो the word is annual range. Look at the formula and tell me. Sum of rainfall of all. Very good. He is only making the first mistake. Annual range. That is third formula. Sir, first Highest formula. month minus the First lowest month. जिसके पास वॉल्यूम है जरा देखो. Annual Third range. तो क्या हो गया? और ये 2 महीना एनुअल के अंदर ही पड़ता है ना, या एनुअल के बाहर पड़ता है. Look at the annual range.
Look at the highest month's temperature. Check. July is it 41, and lowest will be somewhere in Feb, I think. Feb देखो. हाँ 8.4. तो अभी लिखो. ऐसा लिखा नोटबुक में पेज 136 कौन? तो इधर लिखो. First one you write highest minus the lowest. तो exactly उसके नीचे लिखने का. Highest कितना है? 40 is it? 41 है ना आपने बोला 1.0 and इधर 8.6. हाँ चलो 4 है 2.6 अभी माइनस करो इट इज टेम्परेचर यू शुड राइट इन सेंटीग्रेड हाँ करो 2.6 तूने किधर किया इतना अच्छा तू ओनली मेंटल है बट सम्स नहीं है बस अरे 32 बोला तुमने चलो ना तो बोर्ड में है I'll come at the last to be the beast carefully करना it's only the decimal you have to be very careful हो गया तो सर कितना है हाँ ठीक है तो लिखना फिर annual range of temperature is यस हाँ पूरा सेंटेंस नीचे नीचे नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट लाइन लिख रहा है did I write page number 136 question number 4 सर रेड अच्छा तू क्या भाई एकदम आराम से बैठा है किधर है पैराशूट सब छोड़ के कूदने आया इधर my volume is given now उधर नहीं है मेरा वॉल्यूम है क्या सर he did not write annual temperature क्या हाँ चलो ठीक इनको तो वैसे भी ये बैठा हुआ है कुछ नहीं चाहिए इसके बिना सर हम लोग गए सुपर कंप्यूटर्स स्पेलिंग में तो जरा दादा जी के बाहर आके बोल फिर पढ़ेगी तो अंदर आके नहीं व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन लेट्स रीड सेकंड क्वेश्चन पढ़ना जरा क्या है rainiest month sorry they have asked months तो more than 1 month रहेगा जहाँ rainfall is very high कौन सा मंथ से rainfall high हो रहा है देखना देखना कहाँ है हाँ जुलाई में सबसे ज्यादा है तो यू राइट जुलाई अगस्त सितंबर जुलाई में है तो यू राइट जुलाई अगस्त एंड सितंबर और जुलाई के ब्रैकेट में मंथ रेनफॉल लिखना अगस्त के ब्रैकेट में रेनफॉल लिखना और सितंबर आर द रेनिएस्ट मंथ राइट डाउन विदाउट द टेक्स्ट बुक पीपल जुलाई अगस्त एंड सितंबर आर द रेनिएस्ट मंथ्स सर डिटरमाइन हुआ बेस्ड ऑन नंबर जिसका 3 हाईएस्ट है सो अरे ग्रुप में भी है वैसे हां बट वो हम सॉल्व नहीं ऐसे करते तेरा तो टेक्स्ट बुक ही है उसके में ठीक है करते हैं टेक्स्ट बुक का भी and then the last question let's read the last question is the station X located in the coastal area or continent लो मैं इधर explain करना भूल गया now when I say coastal area again you have to check the temperature is the temperature steadily very high मतलब मार्च के बाद टेम्परेचर बढ़ रहा है उधर देखो ना मेरे पास तो नहीं टेबल उधर देखो अगर कोस्टल रीजन रहेगा ना you might see the temperature might dip No, it's rising and Feb से rise हो रहा है क्या देख is it up till October November the temperature is very high till October it's 29 and then if it is coastal region one more signal check the rainfall वो तो सर पकड़ के बैठे कुछ समझ में नहीं आया कोस्टल रीजन में रेनफॉल आके जून टू सितंबर स्टार्ट होगा जून में रेनफॉल बढ़ रहा है जून में हाँ कितना है 12.5 ये बढ़ रहा है क्या उससे पहले 0.5 अच्छा उसके आगे उसके आगे 17.8 18.5 फिर 12.5 फिर 12.5 तो you write the above region is located in the interior part station X right you will get it don't worry the above station is located in the interior region अगर रीजन पूछा तो लिखो नहीं पूछा तो अभी मैं दे रहा हूं बट एग्जाम में आप मत लिखना कुछ बोलते हैं रीजन लिखेगा मार्क्स जाएगा did they ask the reason no then leave it now page number same one और एक क्वेश्चन है ना अपने पास क्वेश्चन नंबर 7
The second last girl, please read that question. 7 का first question क्या पूछ रहा है? Volume है ना आपके पास? अच्छा, there are you read. Identify the hottest months. हाँ, अभी जैसा वो rainiest months है ये hottest months है. Check करो. Which are the months the temperatures are very high? 28.6. May, April, May, June. ठीक है. Everyone write down. Hottest months are What's the question? Question number 7. हाँ. Hottest सब one उसमें one रहेगा. Okay. Hottest months are April, May and June. Then read the second question. You read the second question. Calculate the annual rainfall. अभी only annual बोला है. Did they say average? No. तो अभी पूरा 12 महीने का ऐड करो. कैसे करेंगे? Maximum are not having the volume ना. No, sir. एक काम करो. Now you make a table. Those who are not having the volume and having the volume, make a table. Everyone make a table. ऐसा बना. सर तो सर जब लोग जो ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक में एक टेबल ऑलरेडी है उसमें ऑलरेडी लिखा है कैलकुलेट द एनुअल रेनफॉल वो उसमें नहीं कर सकते. ये क्या मैं इधर से टिम्बकटू से सिंगापुर जब मारूं. चलो देखो. नो. बनाओ टेबल बनाओ. फर्स्ट 3 कॉलम बनाओ. हॉरिजॉन्टली मंथ, टेंपरेचर एंड रेनफॉल ऐसा बनाना पड़ेगा. ओके अप टिल 12 टेबल भी बनने दिया. सर ऐसा ही है. हाँ सेम है सर नो प्रॉब्लम. यू कैन ब्रिंग द बुक कंडीशन. सर बुक में है ना सर इसके बाद मैं उधर ही लेके जा रहा हूँ. सो टेक्स्ट बुक से करना है सर क्यों नहीं करेंगे? तुम लोग ने वही लाया तो फिर देयर इज नो अदर चॉइस. टेम्परेचर पहले मंथ्स लिखो है ना, फिर नीचे टेम्परेचर लिखो और नीचे रेनफॉल लिखो एंड देन डिवाइडेड बाय 12 है ना. डिवाइड मत करो, सॉरी, मेक द कॉलम ऑफ 12. एंड मंथ के आगे जे लिखते जाओ. पूरा मंथ नहीं लिखा तो भी चलेगा. जन फेब. My target is to finish this chapter today by hook or crook. If I am not finishing, then I am not going to start this chapter next week. I will be jumping on to topo. At least bring your volume. If your school has given the new textbook for topo, ना वो भी लेकर आना. उसमें से भी करेंगे हम सब. Months. हाँ yes monthly. उस भाई साहब को आज ही मालूम पड़ा साल में 12. और हमको क्या पता दो डेटा रुक जा वो मैं डिक्टेट करूंगा. रुकना है. व्हाई डू जंप लाइक ए फ्रॉग? वो है ऑलरेडी. अच्छा सॉरी इतने बड़े दौरे पर वही तो नहीं यहाँ से इलेक्ट्रिक शॉक लगा उधर अभी पहुंचा. चलो राइट फॉर मंथ ऑफ जैन एंड गिविंग ओनली टेम्परेचर. आप लोगों ने पहले क्या लिखा है? टेम्परेचर ना एवरीवन. So start writing the temperature. I will not repeat. You also don't repeat. I'll go very slow so that everyone gets the same number. Ready? पहला column month. उसके नीचे temperature. उसके नीचे rainfall. Rainfall. चलो I am giving temperature now. Ready? Nobody is repeating because you repeat, the other person will write that same in 2 months. 21.0. January. टेम्परेचर. और भी कुछ पूछ लो. फरवरी का दे रहा हूँ 21.9, 24.3. ये किसका है? अरे यार इधर को बच्चे के क्या बाद जुलाई आता है. लिख. I am repeating भाई it. तो चेकअप करवा 21.0, 21.9, 24.3. अभी फोर्थ वन था 27.2, 28.0, 26.4, 26.1,
25.4, 25.0, 26.0, 23.8 and 21.2. I'll repeat. I'm going fast, repeating Jan to December, and just check. 21.0, 21.9, 24.3, 27.2, 28.0, 26.4, 26.1, 25.4, 25.0, 26.0, 23.8 and 21.2. क्वेश्चन क्या था एनुअल रेनफॉल रुकना अभी रेनफॉल बाकी है ना, ये भाई सब कैलकुलेट भी कर दिया, जबकि रेनफॉल है क्वेश्चन ही टेम्परेचर डाल के ऐड करके रेडी कर स्मार्ट ना स्मार्ट. Now let us go to rainfall now. I was watching him, the mistake he was doing. I was मैंने बोला भी नहीं है तो बोल देखो ना पास क्या वो क्या है ना है आपका यूज कर लिया अभी रेनफॉल ना जान 5.1 2.8 1.2 जल्दी बोलो तो 1.7 3.9 4.6 8.4 11.4 11.9 31.6 34.5 14.8. Shall I repeat? सर मेरा ग्राफ बस नंबर है ठीक है दिसंबर साइड में लिख लो. I'm repeating it. 5.1 2.8 1.2 1.7 3.9 4.6 8.4 11.4 11.9 31.6 34.5 and 14.8. Clear? अभी now write the question also. पहला question है identify the hottest months. So we've written that now. Second question, calculate the annual rainfall. Only add, don't divide. अभी third question लिख दो. Name the winds that bring maximum rainfall to this city. ये मैं solve करूँगा. तो 1 and 2 आप लोग solve करो. In the wind. Which bring maximum rainfall to this city. Only we have to identify. Northeast या south. अभी second वाला करो. First वाला तो हम लोग ने कर लिया. सर Only annual rainfall मतलब my dear only add, okay? And annual average, annual range, तब थोड़ा सा formula change हो. Rainfall को add करना. तो ये तो पूछा है. So 122.9 Wait, let the others do. तू तो कुछ किया ही नहीं, तुरंत है. सर दिमाग तेरा दिमाग है कि? सर action area method sir look at this. I don't want that actually. सर देखो there are 12 months and वो 12 months में consecutively उस 2020 में I first मैंने 12 इसका किया. मतलब भाई एक मिनट. I understood what rubbish you are doing. Don't teach that to my other students. Okay, sir. वो clarity था. ये rubbish है. दूसरे इसका नाम rubbish है. Hey, you go with the conventional method. Yes, during my college and school days when I used to learn maths, ना ऐसे बहुत सारे मेरे friends थे. इसका उठा के average उधर डालने का उधर उठा. Ultimately wrong answer है. हाँ, वो दिखता ही. Next lecture, both of your notebook volume का सारा answer ये chapter का मुझे complete चाहिए.
Expect then Deepavali crackers नहीं, summer month crackers. Sir, both of you. तो सब लोग ये क्या बात है? अरे बाकी लोग नहीं करेंगे तो उनको तो मैंने तो पड़ेगा। वही कहा ना उनको, करना क्या है? करना कुछ नहीं है, मुंह बंद रखना नहीं सर सर बताओ ना आपका ये एडजस्ट करना क्या है? करना है। मुंह मत करो, मुंह करो, बस हो गया। और एक क्वेश्चन भी है, थर्ड क्वेश्चन। ओके तो आप लोगों ने आप करोगे तो आपको अच्छा रीड तो करना, ट्राई तो करने का कोशिश कर। सर क्या क्वेश्चन था? मैंने लिखने बोला तो नहीं लिखा है। सर वो You read the question for you. winds which bring maximum rainfall. Check सुना ही नहीं दिया सर। Winds which bring maximum rainfall. आइडेंटिफाई करो। अगर अक्टूबर नवंबर रहेगा तो नॉर्थ ईस्ट है ना? अगर जून टू सितंबर ज्यादा है तो आपने rainfall calculate करना है. मैं रेनफॉल सोचो। मैं रेनफॉल ही दिया। 20 वाला युवा चाहिए ना। हाँ, ये मतलब ये बहुत तो है. कैलकुलेट है रुक जा। टेम्परेचर नहीं, मैं क्या बोला सब टेम्परेचर 20s में ना। टेम्परेचर नहीं है 20 में रेनफॉल ये है। करना rainfall है, मतलब पटेगी तो मान. टेम्परेचर मैक्सिमम मारेगा। हाँ नहीं वो रेनफॉल है, नीचे वाला रेनफॉल है, ऊपर वाला My तू dear तो sir, तू my dear sir, तो आगे देख ले। leave one, leave one. सर सही किया मैंने। हम टेम्परेचर से टेम्परेचर आना चाहिए रेनफॉल आना चाहिए। भाई मैं तो दोनों अरे क्वेश्चन क्या पूछा मैं क्या? रेनफॉल हाँ रेनफॉल का ही तू करना है। रेनफॉल तो टेम्परेचर का किया है, टेम्परेचर का नहीं करना है। ना थोड़ा सा है तो पूरा ही है. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दिसंबर होते होते ये स्कूल में मैं रहेगा तुम्हें या कैलकुलेशन निकाल दिया। मैंने क्या किया वो बोल रही थी कब से। Hey, what your friends are saying, instead of adding rainfall, you have added temperature. ऐसा बोलो उसको। हाँ वैसा ये थोड़ा समझ में थोड़ा ठीक है, अभी ऐड कर दो। Okay guys, third question का आंसर क्या रहेगा? अगर if it is June to September rainfall is high, then you write southwest. अगर अक्टूबर नवंबर है, you write northeast. ओके नॉर्थ ईस्ट. पक्का? अभी लिखो ना, हिल स्टेशन northeast monsoon winds. Hey, how many accurate टेम्परेचर है. पता है 131. रेनफॉल करना है. 131.9. टेम्परेचर का correct, correct. More than 3 people, 4 people are getting going. सर मुझे भी नहीं, कुछ नहीं किया। 102.9. सर ये देखो हाँ, ऊंची में है यार. correct, correct. अरे सर कर। रेनफॉल का एडिशन 131. ठीक है, ठीक है। वो नींद से रहेगा तो जग जाए। उसके ऊपर अगर बैठे तो 131.9. अच्छा, इसका- अब सर ये मेरा हाँ, इडली बॉटल. चिकन बॉटल है। ठीक है यार। पानी तो है, उसने एसिड थोड़ी भर दिया है। वो भी बाथरूम क्लीन होते हैं। Okay. अभी next. And now majority people are having the textbook. So what is the textbook? Everyone is having the same textbook, is it? Morning star. फिर अभी वो कैसे मैच करेगा? Same ही है, morning star. एक काम करते हैं। Look at your question. Try to match whatever I'm data reading. Jan का 23.1 है क्या देखो? Textbook पर। सेम ही बताओ यार. तो Page number. 92. Boy, you check your this one. Same है क्या? सर should we start solving? 23.1, हाँ 24.8, हाँ 26.5. रवि रेनफॉल देखो 15.3. हाँ हाँ चलो ये क्वेश्चन सब लोग करो, सबके पास सब। तो इसका हाँ, वही। क्या किसका नहीं? इसका इसका तो तीनों, फर्स्ट वन तो हॉटेस्ट मंथ है ना, देखो ना। हो गया हाँ वही है उसी का। थर्ड वाला इसका थर्ड वाला तो नॉट इफ it is rainfall is in the month of where is high, check rainfall high. इधर है ना 11.9, 31 point, ये नॉर्थ ईस्ट है। ये वाला ना हाँ, solve the textbook question now. ये कर अभी now I am not going to help you on आत्मनिर्भर। वरना तो फिर पाकिस्तान के फिर पड़ोसी वाले बन जाएंगे। Yes. Which one? What do you want?
The test will be soon launched. Correct? Go ahead. Keep on doing the silently. Test will be soon following as soon as I freeze my lectures for the test chapters. So be ready for climate chapter anytime. So do we have to make the tables? No need ना नहीं रहता है। वो तो मैंने उसलिए बोला कि हाँ सबके पास आ रही हाँ you seems to be sensible you seem to be a sensible girl only in some time or always hey now you are testing my patience Okay sir, सच में क्या आंसर है पहले हेलो सर अच्छा टेक्स्ट बुक का कौन करेगा हाँ टेक्स्ट बुक का कौन there I have seen from childhood very normal style or a hyper style मैं सर कब ऑब्जर्व तुझे ऑब्जर्व करने वाले पूरी दुनिया है तू ऑब्जर्व carefully now no need to draw the table directly add and जो भी है वो करना है So maritime is closer to the shore, right? maritime is that distance from the sea wall continental मतलब Delhi maritime मतलब Mumbai and adjoining region Yes. 115.3 114.3 114.3. देखो 165 Why did do answer correct है मुझे Irish. Yes. dog will feel ashamed in front of you ऐसे झगड़ा dog भी नहीं करता Obviously. ये तो तूने कैसे calculate मैं तो सिर्फ ट्रिक ही calculate कर रहा हूँ yeah all are present today or anyone absent today also अभिप्राय अच्छा है कौन है वो वो भी गया आपके लेक्चर के पहले क्यों उसको बाहर जाना है Sir, he avoided lecture. यस सर हिस्ट्री के दोनों की है उसमें कौन ठीक है but did he attend my first lecture day No, sir. ये मुझे करा था अभी तक आप मिले ही नहीं उससे वैसे मिला भी नहीं कौन से साइन वन सही किया? 1.5 आया ना एक किधर गया? क्या नाम है उसका अभिप्राय. रोज जाना चेक कर लो When I sing, सिन्हा अभी is it any work to you now you do your sum okay. सर हो गया टेक्स्ट बुक वाला तीनों मैंने मैंने 3 क्वेश्चंस है उसमें अभी आई थिंक ना 165 है इसको Extra one. So second question is, read the question for me what can you conclude about the climate of the station? ठीक है you wait then third question क्या है So उसमें ये भी है, is it maritime or continental? हाँ if it is maritime मतलब मुंबई जैसा रहेगा continental मतलब दिल्ली जैसा रहेगा extreme समझा चलो maritime है ना? हाँ जो भी है I haven't seen the data और वो climate अक्टूबर. से ठंड लगी ऑफ कर कुछ नहीं है रोलेक्स का ये देखा I asked him to solve the question what nuisance is he talking हो गया Second question. what is the answer for the second question then maritime third question penetrating monsoon north east
Then go for the next question from the textbook only. Is the next question given in the textbook? Sir, There are 2 more questions. चलो खत्म एक ही करो. question है. एक question उसमें 2 रहेगा. ये स्टेशन A रहेगा, स्टेशन B रहेगा ना, तो X and Y रहेगा. Sir, मैं सर Because उसका moderate है क्या देख ले जरा. Temperature वगैरह. ज़्यादा high भी नहीं, ज़्यादा low भी नहीं. हाँ तो फिर वो मैं extremely high रहेगा. Then it is हमारी मिलीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना. meters में convert करना पड़ेगा. मिलीमीटर में दिया है रेंज को क्या? हाँ तो you convert it into centimeters ना. कितना करना पड़ेगा? 1000 डिवाइड 1000 डिवाइडेड बाय 1000. हाँ. Sir, Yes. इधर दिया है calculate iron and for both cities. तो दोनों city का साथ में अलग अलग करना पड़ेगा. इसका स्टेशन A का अलग, स्टेशन B. गूगल पे सर्च कर. सर 1000 से करेंगे तो कितना गिफ्ट आएगा? वो तो करके तो देख. पॉइंट डाल, अब पॉइंट डाल 0 कर दे. और क्या है? वो तो पॉइंट 2 आएगा पॉइंट. पहले तू आंसर ले, फिर मैं करता हूँ. पहले आंसर तो आने दो, आने से पहले ये करो. Carefully do the sums. The more you do, the more is the practice. Sir, which question is that? There are 2 questions, my dear. Follow the first one. 10 one. वन 5 से क्या था उसके बाद? So I think city A is Delhi and city B is 1156 divided by 1000. You those questions you wait. बाकी जो numerical है वो करते रहो. ठीक है? We will discuss that why it is Delhi or something. Zero 1.156. आएगा 1000 से. So you guys have taken economics here, is it? CTP का भी करना है. क्या हो नहीं हो रहा है? It's a- नहीं वो डेसिमल जरा केयरफुल रहो बस. ये वो कैलकुलेशन की डेसिमल लेना ही क्यों है? इसमें डेसिमल नहीं है. बाद में करना पड़ेगा मिलीमीटर. वो यूनिट्स जरा देखते रहना. They will confuse you that also. नोटबुक वो भी तो कर सकते हैं शायद. नोटबुक पे कर सकते हैं.
1026 आ रहा है। Wait, ये 28 कैसा है? भाई 88 होगा 91 सब जीरो है भाई सब जीरो 2 1 और 5 क्या ये सिटी का देखो कितना आ रहा है 156 1026 मैं मान लेता हूँ। अरे मैं तो बोला था इसमें 1 5 ओके और सब जीरो है यार Constant 0 to 8 1.028 816 से पूछ रहा है 1028 हाँ 1028 अलग ही चाल है इसका से बना हाँ 102 गलती वो भी सिटी बी का है वो तो पूरा सिटी अबे अभी वो उसको ऐड कर रहा है अभी उसमें लिखा है अलग अलग लिखा है कैलकुलेट द एनुअल इनफो फॉर बोथ सिटीज अलग अलग लिखा है क्या है फास्टर क्वेश्चन का वेयर आर एक मुंबई के प्लानर ये मेरे को पता नहीं ऐसे क्या है आएगा तो एसी एक्चुअली एसी ऑन कर रहा है गुड फुकट का बोला है देयर विल बी देयर फॉर ऑन करो ना आगे आगे बैठ मैं इधर भी करने ओके तो जब एसी में चला तो कैसे चालू जैसे भी लाइन चल चालू नहीं है वो नहीं वो हो जरा पागल सा है क्या भाई वो तो खुला भी नहीं है वो बोर्ड में चालू है लाइन चल रही देखो भाई क्या भाई वो लाइट से चालू किया हाथ से मेन से चालू मजा कर रहा है नहीं घट आगे आगे बैठना फिर ऑब्वियसली अबे हर जगह गरम नहीं लगता पागल है क्या तू बड़ा हाँ फिर आगे आगे बैठ क्या टाइम चलाओ हो गया अभी नहीं बेइज्जती आगे आगे बैठ जा मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं टाइम में नहीं चाहिए इसी चीज आगे आगे नहीं बैठना 1036 ये 1036 1028 हाँ कहाँ पे होगा मैंने क्या क्या 1028 आंसर है मेरा ये मैंने सिटी जी का ही सेक्स वाला नहीं है टू सिटी का ऑलरेडी 108 टू सिटीज हो गए अरे सभी दिल्ली सिटी मुंबई है अरे यार क्योंकि दिल्ली इंटीरियर में और मुंबई कोस्टल एरियाज में तो उसका टेम्परेचर ज्यादा है डे में और उनका टेम्परेचर कूल होता है नाइट में लेकिन दिल्ली का विंटर में बहुत कोल्ड होता है और जो समर में होता है वो Say something. I'm asking, what is this numericals going on? He's narrating the story. हो गया And तो आंसर क्या है was he narrating the story after seeing me changing it? सर बोला था कि सिटी है दिल्ली और सिटी भी मुंबई अच्छा, they have given the option. नो सर you just assuming वो ऐसे बोल सर assume सच में सर I have You don't know the difference between rainfall and temperature. So there are movies on that. सर दिल्ली में I ज्यादा understood. Let's read the question first. Read the question for me. where are the two cities located give reasons to support your answer Let's see the data first. लोग ने दिल्ली एंड मुंबई ऐसे कुछ बोला है क्या? नहीं सर दिल्ली दिल्ली बोल रहा हूँ ना मैं अच्छा उसीलिए तो हम लोग नहीं सुन रहे. Hey, look at the rainfall. It is 165, 355, 280. So definitely it will be the rainiest part of the world. That is Meghalaya. है ना? Let us come down if we want to see. ये भी कुछ कम नहीं है.
It is 120, 130, 160, 200, 210, फिर 90, फिर 8. तो tell me temperature कैसे हम लोग थोड़ा सा change कर सकते हैं? Look at the city B, 24, 26 temperature 31 एक जगह पर है. इधर एक ही जगह पर जुलाई है, टेम्परेचर इज 30 एंड जून इज 31. 31. बट इतना रेनफॉल दिल्ली को कहां से मिलता है? दिल्ली को मिलता है रेनफॉल. तू जाके बैठ जल्दी को. एक काम करो, द फर्स्ट वन यू राइट वेयर द टेम्परेचर्स आर नॉट वेरी हाई एज मुंबई. Not Mumbai, sorry. Rainfall is very high. Mumbai को इतना rainfall कहाँ से मिलता है? 9 सेंटीमीटर में मुंबई डूब गया था जब मैं भी था पानी में. हाँ, you read मेघालय. और सर मिलीमीटर सिटी पूछा है ना लोग ने. सर वैसे भी 1.028 है इसका. तो एवरेज है, डिवाइड करने के बाद. तो listen, तो you write Mausingram is the first one. Second one चिरापुंजी निकाल दो. अभी क्या करें? क्योंकि रेनफॉल दोनों में 190 कितना दिख रहा है? 120. फर्स्ट वन यू राइट मेघालय, सॉरी मौसिनराम. सेकंड यू राइट मे बी मुंबई. मौसिनराम मत लिखो क्योंकि वो दोनों भी प्लस माइनस एक ही जैसे दिखेगा. फिर सेकंड चिरापुंजी नहीं मत लिखो, मुंबई लिखो. दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग. इतना रेनफॉल दिया है. जब सीटीपी का तो दिसंबर में ही है सर बट इसका 0.2 होगा ना क्या? अच्छा हाँ, ये आप लोग ने एमएम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया क्या? हाँ 10 point. तो पहले वो दिखाओ यार, फिर मैं क्यों देखा? मैंने भी मैंने तो डायरेक्ट ऐड करके फिर करा. हाँ तो क्या है, पहले ये मुझे रिवाइज फिगर दिखाओ. डोंट राइट. 10.36. जरा बताओ मुझे. टेबल ही बनाओ. यू मेक द टेबल, न्यू टेबल एवरीवन, एंड मेक एमएम इनटू सीएम फर्स्ट. सारे डिजिट का नहीं किया, सारे करो तभी तो मैं कंपेयर कर. सारे ऐड किए और एक्सेप्ट कर दिया. ऐसे थोड़ी हर एक अलग अलग करना ही यार. कौन सा है वो उसका दिमाग है ना, उसके तरह गार्ड करने का. अरे सर वही आंसर है देखो. हर एक मंथ का तू एक साथ ऐड करके डिवाइड क्यों कर रहा है? क्या फर्क पड़ेगा? अरे भाई हंसते हैं कुछ पर नहीं पड़ेगा. उसको कुछ नहीं समझा, वो सिर्फ वैसे ही है. समझा सर मैं. हाँ क्या समझा? सर देखो एक साथ ऐड करके डिवाइड नहीं करना. फिर क्या? करना है लेकिन चांद बड़ा कर कभी. हर एक मतलब ना इंडिपेंडेंट एससीएम निकालो, बस इंडिपेंडेंट सेंटीमीटर निकालो, देन इट इज इजी टू कंपेयर. सर ये सब क्या बेसिस है? नहीं चलो करो. Every month you do independent centimeter divided by 1000 or 1000. सर बहुत वाह सर 100 mm makes 1 centimeter. रिकॉर्ड करो प्लीज. AC is on. Now people are doing all 12 months, not only 1 month. So we have to turn every rainfall centimeter. Yes, into centimeter. Then only I can say na. In the table. हाँ. सर 1000 से डिवाइड करना है. नहीं mm है ना. How many mm makes 1 cm वो देखो. सर आप 1000 बोले थे. वो सेंटीमीटर कन्वर्ट करने को. देख मैं की वजह से मेरा ढंग मना ही कर रहा था. Do it divide by 100. अरे ऐसे पॉइंट लगाते जाओ ना. Where it is? यहाँ से लगाएंगे. ये 1.54 हो जाएगा, है ना? ये 1.95 होगा. ये टेम्परेचर. ये देख रही है. Divide by 100. Do it all the months, and then you will get it centimeter. Then it is easy for you to say. मेरी सेटिंग ना तो 10 से ही होगा. अच्छा बाबा 10 से कैसे होगा? How many mm makes 1 centimeter? 100. अच्छा हाँ ठीक है. अच्छा हाँ बोलिए, उसको कॉन्सेप्ट नहीं है. सर मैंने पहले 100 ही बोला था. तो इसने कन्वर्ट कर दिया तुमको भी. डिवाइड. Okay, there is 2 maps of one I will be taking because one is my origin. Whose it is the other one? Yours on No, दो कैसे आएगा? तो नहीं हाँ मेरा खाते भी. 71. हाँ वो जब मुझे देगा तो. चलेगा. No, not allowed. 71. Anytime you get up and go, that is not allowed. There is some adult सर 11.5 का. adult diaper में तेरे लेवल का नहीं क्या? 11.5. हाँ. Hey, please do it and let me know quickly so that I can finish that. सर हाँ बोलो ना. Sir, you start on water. हाँ? You start on water, sir. So what? No, there was no water. Sir, Let it be, no problem.
I am worried for my background, not you. और एक बार इधर ही उल्टा पानी इधर नहीं है ना नहीं इधर है हाँ तो ठीक है चलो हाँ एक्चुअली 00 है वो पॉइंट को आगे करो या जो भी है डिवीजन and make the table and show it to the examiner. Don't do like this. They will not give the marks. Sir, I have a doubt. In the figure they have given. It was her doubt. She asked to you, and you are asking it to me. No. No. He is asking me a doubt. I didn't ask you. Tell me. Sir, the rainfall mm is given over there, so why not convert again? Because we compare के लिए we do it in centimeters, not in millimeters. So but they are given in millimeters. No, convert it into centimeters. All the 12 months converted into centimeters. उसके बाद वो डेटा लिखो. Yes, my dear. Who? But why don't you complete that 30 minutes early all the questions to me? Complete it all. तुमको I am sure आधा घंटा होगा तो भी वो नहीं मिलेगा. ठीक है क्या? You accept the challenge. Complete it as early as possible. मल्टीप्लाई इधर किया The formula is wrong actually. We have to divide by 10 only. Sir, I told it. Correct. Not by 100. I told you. See, अभी ये होगा 1.3, 1.4. 1.4, 1.5, 1.5. क्यों? देखो बहुत कष्ट ले के बाद अरे डेसिमली मूव करने आगे पीछे ओनली डेसिमली I don't want any nuisance stories here. I know you come to UT to run around the buildings only. All corners I've seen. Sir, very. Like last year, I've seen one boy and a girl in one of the park. They are here only, and they are posing for mobile. और मैं normally मेरा बाइक इधर लेके जाता हूँ. मैं उधर गया. फिर दोनों आगे पीछे. मतलब ये करता है ऐसा काम. हाँ. Sir, मेरी बात नहीं कर रहे. रनिंग लेफ्ट से राइट. फिर मैंने पूछा क्या है इधर. नहीं सर, आपसे मिलना है. मतलब मैं तो कराता ही नहीं है. फिर मेरे से क्यों मिलना है. वो क्या है ना सर. हाँ ठीक है आगे जाओ फिर बाद में बात. And put the boy in the bike and took him to the dressing room and given him a nice dressing. अच्छा ओके. कौन बोला भाई तेरी बात है He himself is disclosing that मैं भी ऐसे काम में involved होता हूँ. This is what I want to hear from his mouth. जब भी मैं देखूंगा भाई साहब को कुछ नहीं करूँगा. फिर आगे का काम वो उसके मुंह से खुद ही सुनाएगा. विकेट बाय विकेट अरे ठीक है ना अभी सम्स में ध्यान देना वो है. हो गया फिर. बड़ा पाया वो तेरा पूरी हाँ मुझे वो भाई तेरे बोले थे भाई इसको अच्छा बात है क्यों है गलत है सही है पहले खुद करो. हाँ सर किया सर
आदित्य तेरे गलत है क्या बोल रहा है भाई गलत है तू देगा सर मैं तुझे कैसे लगा हम कर नहीं वो ब्रेक हमें 5 मिनट का ब्रेक था मैं जाना था लेकिन मैं बाहर जाना था ऐसे ही नॉर्मल In my university where I work now, I kept 2 of my main teacher only for this work. सर मैं उसका मैं घर का लेकिन पार्टी था मैंने कुछ पूछा ही नहीं था किधर से आ रहा था। 2 of my teachers are destined for this work only, and very quickly call me, and the next minute I will be there. सर वो कैसे लग सकता है अरे तू अपने आप पे क्यों जबरदस्ती ठोक रहा है? छोड़ ना. You are not there means case done, close. Time and again you are giving explanation means there is something दाल में काला है Unfortunately, we have to bear with it. और दाल ही काला है. Not we. I have to. क्योंकि मैंने सोचा मेरा इनोसेंट बच्चा ऐसा काम कर सकता है. सर आप अरे तू इनोसेंट नहीं है ना, छोड़ दे. क्या है नहीं तो इनोसेंट हो City is 114.6 Which one? Hey, what is the first city? Is it? नहीं उसका I want Hey, don't add or don't minus. Only I want the division. मतलब उसका देखना पड़ेगा. यही चाहिए मुझे. Don't add कुछ. डिवीजन क्यों करना है हाँ वही क्यों कर रहा है? Only उसको divide करके रखो. डिवाइड करना है यार ये सब बुद्धिजीवी लोग हैं यार. मैंने सिर्फ वो ही बोला कि वो मुझे दिखना चाहिए. एवरेज भी चाहिए मैंने कब बोला एवरेज चाहिए? नहीं चाहिए यही गधा एवरेज करके रखना नहीं है. सर नहीं किया हमने पहला ये हम पहला भी नहीं करा पहला भी नहीं किया डायरेक्ट प्लस कर दिया Hey, take down the homeworks now. Chalo. Wait the time. Homework for today. By Monday or by Saturday I come here. सर ऐसा कुछ ट्यूसडे को भी करा सकते हो नहीं पता नहीं वो उस दिन ऐसे स्पेशल लगाया था. अभी नहीं है रेगुलर. Saturday I am Sanpad always. Hey, take down in your notebook. Page number write down. Because these are very important for your board exam. Write down. Page number 136. It is UP volume 1. Question number 9. If those who are having the volume, look at question number 2. ये देखो. And look here, there is one printing mistake. If you could see, इधर question number 9 दिया है और इधर question number 10 दिया है. ये जो question number 10 है, it is the question of this 9 only. So don't mess up कि इधर है, where is the question? This question belongs to this question only. Next. What is that? 137, question number 15 and 18. क्वेश्चन नंबर 137 Page 137. बस हो गया. ठीक. Relax. 7 is the page number. Question number is 15 and 18. वैसे में आप वॉल्यूम में जाके ओपन करेगा तो वही दिखता ही है. वॉल्यूम 2. Page number 138, 26 and 29. And page number 139. so 128 26 and 29. And 139 it is 35. 139 is 35. चलो और कुछ theory questions भी दे रहा हूँ, लिखो. Differentiate between ये theory questions है, right? Differentiate between page number 136. Question number 2. अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं ना, मैं क्या बताऊँ? क्वेश्चन दिखा रहे थे हाँ ठीक है, you're right. Then question number 1 as well. 1 2 पेज क्या 136 में 1 2 3 the volume 3 all volume 2 है. question Then number come to page number 137, 11A B. Yeah, I'm giving good homework now because Monday to Saturday there are close to 5 to 6 days, and including tomorrow there will be 7 days. Tomorrow any test is planned? yes Which one? history History, is it? history and English So now I'll freeze this lecture, climate being done in here with you.
So you expect the next time you will get your geography test as well. So I don't know how you complete and how you learn. Be ready. Ha. Then now come to page number 137. Question number 16. 19. Next page 138. Sir, 137. अभी मैं बार-बार नहीं बोल सकता. Now 138 page number, right? Question number 23, 24. रुको ना, पूरा हार्ड नाउ 10 दिन पड़ा है. नहीं, मतलब मैं एक दिन को 2 में डिवाइड किया ना. अभी हम लोग वही कर रहे थे, तो लेटेस्ट डिवाइड. फर्स्ट हाफ इधर रहता है, सेकंड हाफ घर पे जाके सोते हैं, है ना? तो 2 दिन हो गए. Simply understand. 31. 138 पे ना. 138 पे 31, 139 पे आ जाओ. अरे रुक, ये तो अभी सैंपल है, अभी मैं बोर्ड, हाँ प्रीवियस बोर्ड वाला भी निकालने का सोच रहा हूँ. सर ये होगा नहीं सर. नहीं होगा तो मत. Then I'll call your mother and say तुम्हारा बेटा इधर हर जगह दिखता है बट यूपी में नहीं, इधर बुलाओ. क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37. बस काउंट करो कितना है. हार्डली 10 भी नहीं रहेगा. सर 10 तो हो गया. मैं पहले टोटल अभी 13 हो गया. और 17 है सर. nothing. Every day you solve 5. In 3 days you will be finished. चलो, every day you solve 6. In 3 days it will be finished. हाँ, ये ले, तेरा वाला. I'm giving it back. मेरा पास भी एक वॉल्यूम था ना जो मैंने लाया था फिर. ये तो 2 मैप है मेरे पास. एक मेरा होगा. चेक कर ले. एक तो लिया मेरे से ऑलरेडी तूने. नहीं वो बुक से भी आपने. हाँ ले. And whoever have not made the fair notebook, and I think day 1 से कौन आ रहा है मेरा लेक्चर में जो एक भी एब्सेंट नहीं हुआ. हाँ, just help these guys. क्या हेल्प करें? अरे सर मैं पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ. अपने आप के हेल्प कर ले, वही सबसे बड़ा है. तू नोटबुक पूरा कंप्लीट है. इसके अलावा सर मैं भी दिया. Keep moving, boys move. चलो निकलो. No problem. Keep moving. जल्दी.